हाँ जी बच्चा, is it okay now? Is that audible? Sorry, there was some technical issue, so I have to again make the link. So whenever something like this happens, just wait for a minute and then move to the channel, okay? I will just take 1 minute in making of the new channel and new link, and then we begin. So let's move on. This point is clear to you? 3 कैंडीज थी 6 रुपए की, तो एक कैंडी हुई 2 रुपीज, 2 रुपए की, ठीक है, 2 रुपीज 1 कैंडी. What we did is 6 divided by 3. Similarly here, 3 waves 1 second, तो 1 wave 1 by 3 second. You can say wave की जगह पे कैंडीज लेट कर लो. 3 कैंडीज 1 रुपए की, तो 1 कैंडी 1/3 रुपीज की. Fine. So 1/3 second you write, that is also correct. If you get it into decimals, that is also correct. Try karo that you bring the things into decimal. Fine, because decimal we consider it as the standard one. Fraction को decimal में जरूर change करो. The plus point for you is you have calculator. You can easily do tuck and your work is done. Fine. So do that. Don't skip this portion. ठीक है? So answer is given by Nazrul and Dilpreet. Congratulations. Good. Very good. Okay, now this is what we say time period. एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास होंगी, that is called frequency. Like here, एक सेकेंड में 3 वेव्स पास हुई, तो 3 is the frequency. Frequency का यूनिट होगा आपका hertz. So if 3 waves pass in 1 second, the frequency is 3 hertz. If 5 waves pass in 1 second, frequency is 5 hertz, and so on. Similarly, time period. Time period मतलब एक वेव, चाहे उसको कंप्लीट होने में 1 सेकंड लगा, आधा सेकंड लगा, 5 सेकंड लगे, whatever. एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड, मींस द टाइम टेकन बाय वन वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन. फाइन, उसका टाइम. सो वन वेव को कितना टाइम मिला, 1/3 सेकंड. दिस इज व्हाट वी से टाइम पीरियड. ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी. एक सेकंड में कितनी वेव्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी. एक वेव कितने टाइम में, दैट इज टाइम. Okay, the last one is your speed, and the formula for speed is what? Speed is equal to, speed is what? It is equal to wavelength multiplied by frequency. जितनी आपकी wavelength होगी multiply by the frequency, or you can have speed is equal to wavelength divided by time period. Fine. This depends upon which two things are given to you in exam or in the numerical. Fine. So you have to choose the formula accordingly. अब इस formula को choose करना, इसको याद करना, it's not difficult. फ्रीक्वेंसी है तो मल्टीप्लाई करेगा वेवलेंथ के साथ, टाइम पीरियड है तो डिवाइड करेगा. और इसी कर लो इसको. यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. इतना तो पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. नाउ स्पीड की जगह पे स्पीड, डिस्टेंस इन केस ऑफ वेव तो हम बोलते हैं वेवलेंथ, लेंथ ऑफ द वेव, द डिस्टेंस ऑफ द वेव. फाइन. तो डिस्टेंस की जगह पे लिखेंगे वेवलेंथ. टाइम इज टाइम पीरियड. So d की जगह पे wavelength, time की जगह पे time period. Speed is equal to wavelength over time period. ये याद हो गया. Time period का opposite होता है frequency. Time period का opposite होता है frequency. कैसे? Look at, look into this. 3 waves in 1 second. ये थी आपकी frequency. Frequency है 3 hertz. Time period कितना हुआ, 1/3. Fine. 1/3 अपोजिट हो गया ना. फ्रीक्वेंसी का अपोजिट क्या हो गया, आपका टाइम पीरियड. और इफ मैं प्रोवाइड यू टाइम पीरियड इज 1/3, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 3/3. फाइन. सो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दे आर अपोजिट टू वन अनदर. अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम पीरियड डिवाइड कर रहा है, तो अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वो क्या करेगा, वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई. गॉट इट?
Okay, so moving on with the longitudinal and the transversal waves. Hani, please let me know if till here there is any doubt. Kindly send a message, let me know if any doubt till here. ओके जी, now the next is longitudinal and transversal wave. सबसे पहले लिखो उनकी डेफिनेशन, then we understand it. नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे, then we write the definitions. Okay, so this is your one spring. Fine. I apply force onto the spring from one side. Then what happens? The first few turns of the spring, first they come very close to one another and then they go apart. Again they come close, again they go apart. Again they come close, again they go apart. ऐसे होगा? Because I apply force onto it. तो जब मैंने force apply की, see I apply force from the side. So this turn will collide with the next one, with the next one, next one. उसके बाद ये फिर वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं आगे आगे जाते रहेंगे. They collide and they come back. Fine. So you have few of the turns together, few apart. एक spring है, apply force onto the spring, you will see that few of the turns they are close and few they are apart from one another. Fine. So this formation, it happens in the wave. We call it as a longitudinal. क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल. इसमें क्या हुआ, एक्चुअली वेव की डायरेक्शन कौन सी थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेव आगे को मूव करी एंड योर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो इन द डायरेक्शन, से ये आगे को मूव करेंगे, देन ये आगे को मूव करेंगे, देन दिस वन. सो द डायरेक्शन ऑफ द वेव एंड द डायरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दे आर इन द सेम वे. फाइन. सो दिस इज व्हाट वी से लॉन्गिट्यूडनल. ये दोनों आपस में पैरेलल हैं. फाइन. तो अगर ऐसे मूव करेगी वेव, वी से दिस इज लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल में दो चीजें बनेगी, वेयर दे आर क्लोज टू वन अनदर वी कॉल इट एज कंप्रेशन. कंप्रेशन पता है ना, कंप्रेशन मींस कंप्रेस, कंप्रेस से बनता है कंप्रेशन, कंप्रेस होना. फाइन. सो व्हेन दे कम, द टर्न्स दे कम क्लोज, दैट इज कंप्रेशन, एंड व्हेन दे मूव अपार्ट from one another, this portion we call it as rarefaction. Normally आप इसको लिख सकते हो compression by C, rarefaction by R, then here again compression, again here rarefaction, again compression, again rarefaction. So the wave formation in which you see the compression and the rarefaction going on, उसको हम बोलते हैं longitudinal wave. कौन सी वेव बोलेंगे उसको हम? longitudinal. Fine.
Is this clear? Moving on with the next one. What is transverse wave? तो मैं जो मेन आपका स्प्रिंग है उस पे रेस नहीं करूंगी, लॉन्गिट्यूडनल वाला पोर्शन पे रेस करूंगी. लॉन्गिट्यूडनल में they go along with the wave and there is formation of compression, rarefaction, compression, rarefaction. Moving on with the second one. In second, your wave formation goes like this. Transversal में wave formation spring ऐसे move करेगा. For example, you can have it like this. ऐसे spring होगा. Fine, it keep moving like this. Like you have the spring, you just move it up and down like this. Fine. तो उसकी ऐसे formation बनेगी. So if you see this kind of formation of the wave, we say this is the transversal wave. Transversal में दो चीजें बनेंगी. One is the upper portion called as crust. One is the lower portion called as trough. इसमें अब compression, rarefaction नहीं होगा. If you have the wave parallel, the molecules parallel, compression, rarefaction formation होगी तो हम उस wave को बोलेंगे longitudinal wave. If it will be up and down, that wave we call it as transversal wave. Transversal wave में you will be having two things forming. One is crust, one is trough. Longitudinal में also you have two things, but compression and rarefaction. यहाँ पे बनेगा transversal में बनेगा crust and trough. एक और चीज याद रखना, longitudinal में they go like this, parallel. यहाँ पे देखो wave move आगे कर रही है, so wave formation is in the forward direction. लेकिन this molecules movement is up and down, so either like this or like this. It means they are at an angle of 90 degree, either upward or downward, but the angle of 90 degree. मतलब in longitudinal wave the formation is parallel to the principal axis. In a transfer it is perpendicular to the principal axis. Fine. We are going to have the definitions. Definitions are written onto your book. I am going to read it from from there. You are going to have your pen or pencil along with you, and you are going to underline it. Highlighter है तो वो ले लो, pencil है तो वो ले लो. If you want to write it, you can do that. Right now you can underline. Later on you can write it down. Fine. But let's understand. So moving on with the definition. So reading the longitudinal and the transversal wave, all waves transfer energy without transferring matter. मतलब matter मतलब molecules खुद के खुद आगे pass नहीं होंगे. Only one thing passes, that is energy. Fine. Like if the molecules they move, यहाँ पे आपको बताया था compression, rarefaction. तो turn second term से collide करेगा, energy pass करेगा and come back to the original. Second के पास एनर्जी आ गई, that will collide with the third one, एनर्जी पास ऑन होगी and the second will come back to its position. ऐसा नहीं है कि टर्न्स खुद भी आगे मूव करेंगे. Turns when the molecules when they collide, they just pass the energy to the next one. While collision they pass the energy and then they move back to the original position. Fine. यहाँ पे हम turns नहीं बोलेंगे, we say the molecules. ये सिर्फ टर्म्स, ये जो स्प्रिंग है, this is just to give you the actual view of it. Fine. With one example, that is with the help of this spring, ताकि आपको समझ में आ जाए that how the molecules they move, what is compression, what is rarefaction, what is crust, what. But ऐसा नहीं है that if you have the wave, so there are terms included. There are no terms, there are molecules. ये terms is just an example to explain because molecules की form में explain करना is difficult.
Fine. So they gave you a real view of it through this spring. ठीक है? तो जैसे spring forward backward movement show करेगा, that is similar to that of longitudinal wave. जैसे ये up and down movement show करेगा, that is similar to that of the transversal. Okay? Okay. So what actually is there that the molecules they are not actually passing matter जो है वो direct pass नहीं होगा, only one thing passes, that is the energy. The wave motion, all the waves transfer energy without transferring of the matter. Wave motion can be illustrated by vibrations in rope or a spring. Fine. So they have very well said that wave motion can be illustrated. मतलब उसको समझने के लिए we can take the example of vibration of rope. Rope की जो up and down movement होगी, forward backward movement होगी, और we can also illustrate it by using spring. मतलब ये दो आपके पास examples हैं wave motion को समझने के लिए. Figure 4.2 shows two types of wave motion illustrating a spring. In the longitudinal wave, the vibrations are in the direction of transfer of the wave, travel of the wave. This type of wave can be shown by pushing or pulling a spring. Fine? आप spring को push करोगे, pull करोगे, तो उसके कारण जो turns, compression, expansion होगी, that shows you the formation of longitudinal wave. The spring stretches in place and squashes in others. The stretching produces the region of rarefaction, जहाँ पे stretch हो जाएगा, stretch मतलब expand हो जाएगा, वहाँ पे rarefaction आ जाएगा. Where the coils spread out, while the squashing produces the region of compression, where they just come closer. Fine. The sound is the example of the longitude. अब जो sound है वो किसकी example है? वो है longitudinal की. क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तभी आगे आगे साउंड ट्रैवल करेगी ना. एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ वाइब्रेट करेगा. सो व्हेन दे कम क्लोज, कंप्रेशन. व्हेन दे गो अपार्ट, रेयरफैक्शन. व्हेन दे अगेन कम क्लोज, कंप्रेशन. दे गो अपार्ट, रेयरफैक्शन. एंड सिमिलरली दे पास द एनर्जी मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल. सो साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. इट कैन बी इन योर एमसीक्यूज आल्सो दैट दीस आर द फोर एनर्जीज. लाइक वहां पे आपको साउंड दे देंगे, लाइट दे देंगे, दे गिव यू वन मोर, वन टू मोर. ठीक है? यहाँ पर द क्वेश्चन इज द लॉन्गिट्यूडनल, द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. ऑप्शन ए साउंड वेव, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, साउंड एंड लाइट, ऑप्शन डी नीदर साउंड नॉर लाइट, मतलब दोनों ही नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज साउंड. और जो आपकी लाइट है दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्सल वेव. दैट गोस लाइक द ट्रांसवर्सल फॉर्मेशन. ओके, सो साउंड इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. प्लीज अंडरलाइन दिस. For the longitudinal wave, the wavelength is the distance between two consecutive points of maximum compression or the distance between two consecutive points of minimum compression. The amplitude is the maximum particle displacement of the medium vibration from the undisturbed position. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. What is compression, what is rarefaction, and what is this amplitude and all. Moving on with the transversal wave. The vibrations are at right angle to the direction of the travel of the wave. Transverse में vibrations right angle पे होंगी to the travel of the wave. See, the wave is traveling, going in the upward direction, और vibrations उसके according up and down movement में है. Fine. Light wave, radio wave and other electromagnetic waves, they all are abhi padhoge what are these electromagnetic waves in the next of your chapter. Fine. So we have a lot of waves. They come in the category electromagnetic में you can have the example like UV rays, fine, or infrared, these all. Fine. So they all have transversal nature. ये किसके एग्जांपल्स
radio and all. We will look further at electromagnetic wave in the topic of electromagnetism. Okay, they have told you there only कि ये हम next chapter में study करने वाले हैं. In the example 4.2, the waves are very narrow and confined to the spring that they are traveling down. Most waves are not confined in this way. Clearly, a single wave on the sea, for example. So this is all what you can go with. Okay, ji. So is this point clear? The longitudinal and the transversal wave. Okay, अब हम चैप्टर बिगनिंग से बात करेंगे. फर्स्ट वी डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल वेव प्रॉपर्टीज. उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट किया द वेव मोशन. इसमें हमने वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स करे, मेन वेव लेंथ किया, फ्रीक्वेंसी किया, एम्पलीट्यूड किया, स्पीड किया, एंड वी इंट्रोड्यूस्ड वन मोर इनटू इट, दैट इज टाइम पीरियड. दैट इज आल्सो you can write it down. Fine. Then wave transfer energy and information, you can read that. Next topic on page number 152 of your book, it is the longitudinal and transversal waves. Topic बहुत easy है, बस ये है कि आपको एक बार पता होना चाहिए. The only thing is that if it comes in the paper, ऐसा ना हो कि आप transversal वाले points longitudinal में लिख दो, longitudinal वाले ट्रांसवर्सल में लिख लो. बस यही आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज इट इज वेरी इजी. फाइन. और उसको ध्यान में रखने के लिए ना, यू कैन जस्ट हैव वन क्लू, दैट इज टी. ये देखो ये टी बन रहा है ना, 90 डिग्री टी ट्रांसवर्सल, ठीक है. और जो दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल, जहां पे राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा वो ट्रांसवर्सल, एंड द अनदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल. ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. वो मैंने आपको अभी इस टॉपिक के पहले करवाया है, दैट इज स्पीड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है. फाइन. उसके बेस पे न्यूमेरिकल आपको आने हैं. हमने क्या रिलेशन किया अभी, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं. बस उतना ही छोटा सा टॉपिक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, बट आई वांट कि आप याद नहीं करो, आप समझ लो कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ताकि पेपर में आपको ये ना हो कि यार यू आर प्रोवाइडेड विद 2-3 ऑफ द थिंग्स, वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, एंड देन यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेगा या मल्टीप्लाई करेगा. सो टू सेव दैट थिंकिंग टाइम, फॉर्मूलेस को याद मत करो, उसको समझो थोड़ा सा. वन फॉर्मूला व्हिच यू ऑलरेडी नो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, उसको तो याद करने की जरूरत नहीं है ना. सो वी यूज दैट फॉर्मूला. फाइन. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. अब we are going to talk about the speed of the wave. So speed of the wave is equal to the distance of the wave divided by the time taken by the wave. उसको हम क्या बोलते हैं? Distance of the wave is called what? It is called wavelength. So reach to the actual words ना, then that is your formula. Fine. Time taken by the wave, उसको क्या बोलते हैं? Time taken by one wave. One wave complete. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना. ये क्या था अभी, सो दैट इज टाइम पीरियड. तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड. सेकंड, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ. अब अगर टाइम पीरियड नहीं आपको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना, सो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज opposite of time period. So 1 over time period is your frequency. तो अगर time period divide कर रहा है तो frequency multiply करेगा. So wavelength multiply by frequency. तो ये आपका बन गया सेकंड फॉर्मूला. अब इसको याद करना है, याद कर लो, बट आई वांट कि आप याद नहीं करो, आप उसको समझो.
सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस की जगह पे वेवलेंथ, टाइम की जगह पे टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड डिवाइड हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइन। नाउ बेस्ड अपॉन दिस यू हैव द क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऑन द नेक्स्ट पेज। वर्क एग्जांपल है, देख लो, इजी है दोनों। ओके जी, गुड जॉब। सो एग्जाम्पल दोनों एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्व आप खुद ही कर लोगे बिकॉज सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड यू गेट द आंसर। एक बार डिस्कस, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी, अगर कहीं डाउट हुआ तो उसको क्लियर कर लेते हैं। द टाइम इज 2:30, द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, सो देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। ठीक है, ये एक बार दोनों क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं ताकि आपका टॉपिक कंप्लीटली कंप्लीट हो जाए, फुली कंप्लीट हो जाए। ओके, so question number 1, work example, page number is missing, let me just check, 52, 53, 54, 154, page number 154, work example, question number 1. A loudspeaker makes a sound wave with a frequency of 300 hertz. Loudspeaker makes a sound wave with frequency, sound wave की frequency given है 300 hertz. The wave have a wavelength of 1.13 meter. Wavelength भी given है आपको 1.13 meter. Calculate the speed of the wave. आपको speed find करनी है। तो आपको क्या क्या given है? Frequency given है, wavelength given है, speed find करनी है। This is the formula. Wavelength लिखो, multiply the frequency, that's your answer. Speed है, speed का unit क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। स्पीड पूछी है तो उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, स्टैंडर्ड। वेवलेंथ मीटर, क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ इज डिस्टेंस, तो उसका यूनिट मीटर। फ्रीक्वेंसी का क्या पता है आपको? हर्ट्ज, HERTZ, या फिर कैपिटल H स्मॉल z लिख सकते हो, ठीक है। द स्मॉल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, हर्ट्ज। ठीक है जी। अच्छा, एक बचा आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड। एक और चीज याद रखना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। तो आप इससे भी याद रख सकते हो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड को हर्ट्ज से हर्ट्ज भी बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी को 1 ओवर सेकंड भी बोल देते हैं, ठीक है ना। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 ओवर टाइम। टाइम का यूनिट हुआ सेकंड, तो 1 ओवर सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। सो वर्क एग्जांपल 1 इज क्लियर, डायरेक्ट आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। वर्क एग्जांपल 2, द रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑन अ वेवलेंथ ऑफ 250 मीटर। वेवलेंथ गिवन है 250 मीटर। The speed of the radio wave is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. वेव की स्पीड भी गिवन है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो क्या क्या गिवन है? वेवलेंथ गिवन है, स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालो। सो यही फॉर्मूला लगेगा, वेवलेंथ गिवन है, स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालना। तो फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे वेवलेंथ डिवाइड, सो स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ विल गिव यू फ्रीक्वेंसी। स्पीड लिखो, डिवाइड बाय वेवलेंथ, जितना आंसर आता है आगे लगा दो हर्ट्ज। फाइन। अच्छा, एक चीज, उन्होंने जो आंसर लिखा है ना, दे राइट इट लाइक दिस, आंसर है 120000 हर्ट्ज। देन व्हाट दे डिड इज 120 और 30 मतलब 1000 को क्या बोलते हैं? किलो। तो उन्होंने क्या कर दिया, 1000 की जगह लिखा के और साथ में लिख दिया हर्ट्ज। इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या लिखा है, कैसे आया है। फाइन। के मींस किलो, किलो मींस 30,000। ओके जी, सो आई होप द कॉन्सेप्ट फॉर टुडे इज क्लियर टू यू। एक इसका लास्ट टॉपिक बचा है, वी आर गोइंग टू हैव दैट इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास।
Thank you so much. Till then, take care of yourself. Take care of your families. कोई डाउट कहीं आता है तो मस्ट आस्क बेटा, ठीक है? कहीं पे भी कुछ डाउट आता है, डू आस्क. यू कैन सेंड अ मैसेज. अगर आप अपनी कोई रिवीजन कर रहे हो, यू फेस एनी डाउट एनीवेयर, मस्ट आस्क. ओके? Thank you so much. Take care of yourself. Take care of your families. Stay safe. Stay healthy. Bye bye. See you soon.